Hello everyone, welcome to our channel Technical Academy. In this video we are going to study about extrinsic semiconductor. In extrinsic semiconductor we will study about the n-type material, as we have studied some portion of the n-type material, but some portion of the n-type material were still remaining. So in this video we will cover the remaining part of the n-type material. So let us start our video. So in the first point want to tell that it is important to realize that even though a large number of free carriers have been established in the n-type material, it is still electrically neutral. So this point want to justify that even though we have increased the large number of free charge carriers in the n-type material, but still it is acting as electrically neutral. It means that the n-type material will still not pass the electricity through it. The reason is that we can explain through one figure. So consider that this is our atomic structure of any atom. So in the orbiting orbits, these are electrons that are negatively charged particles, but this is our nucleus. In the nucleus there will be positive charged particles. So in n-type material, the number of negatively charged particles orbiting electrons is equal to the number of positively charged particles, that is neutron and proton will be equal. So the net charge of the atom will be equals to 0. That is the reason, that's why the n-type material still act as electrically neutral. This is the reason we can assume. इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे न्यूक्लियस में और नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे. तो जो एटम का नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है. द इफेक्ट ऑफ डोपिंग प्रोसेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब थ्रू द यूज ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम. सो दिस पॉइंट टेल्स दैट we can describe the doping process through the energy band diagram in a very easy way and efficient way. So let us start and we will compare the energy band diagram with. So in this figure, in the figure number 1.8, you can see effect of the donor impurities on the energy band structure. तो देखिए इसमें हमारा जो energy band gap है, the energy band gap for the intrinsic semiconductor, that is quite high, and this is the energy band diagram for extrinsic semiconductor, that is n-type material. So if we compare them, then the energy gap of the electrons in the n-type material will be very less in comparison to the intrinsic material. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी गैप होगी, एनर्जी गैप बिटवीन दी कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द n-type material, दैट विल बी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द इंट्रिंसिक मटेरियल. और इस फिगर को हम ये सेमीकंडक्टर वाले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाले फिगर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं. तो हमें यहाँ ये पता चलेगा कि जो हमारा एनर्जी बैंड गैप होगा n-type मटेरियल का, वो इंट्रिंसिक मटेरियल से काफ़ी कम होगा. तो उसमें जब हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे, सो इफ यू विल सप्लाई अ वेरी लेस एनर्जी, heat energy or kinetic energy, then the number of electrons will jump from the forbidden gap to the conduction band and the number of free carriers will increase. So the semiconductor will behave as conductor. तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास करने लगेगा. देखिए, at room temperature in an intrinsic silicon material there is about 1 free electron for every 10 to the power 12 atoms. तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1
per 10 to the power 12 atoms at room temperature for the silicon material. So if we increase if the dosage level is 1 in 10 million, if the impurity atoms are increased and the dosage level is 1 in 10 million, that is 1 electron per 10 to the power 7 atoms, then the ratio will be 10 to the power 5. Then our ratio will be 10 to the power 5. That means that this indicates that the carrier concentration has increased by a ratio of 10 to the power 5 ratio 1. तो इसका कहने का मतलब ये कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 पर 10 टू द पावर 5 एटम्स. तो इसमें देखिए हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है. सो इन दिस वीडियो दिस इज एनफ. वी विल स्टडी अबाउट द पी टाइप मटेरियल इन द अपकमिंग वीडियोस. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए. ओके, थैंक यू एवरीवन.